India got its independence. However, in 2023, okay, in the Red Fort, the Prime Minister of India is going to hoist the national flag. It this is a part of our general studies. Ki national flag ta Red Fort hoist ke karanti amara Prime Minister of India. So Independence Day is celebrated annually in the 15th August 1947 as a part of public holiday in India. It's a one of the national holiday. We are celebrating 3 national holidays. हम कौन करछे 3टा national holiday celebrate करछन्ती. कि कोई बार जानिछ 3टा national holiday कौन कौन? What are the 3 national holidays? 3 national holidays which are in India we are celebrating as part of official national holidays. Okay, one is 15th August, okay, as an Independence Day. Second is 26th of January as part of our Republic Day. Third is lesser known कि जानिछ कि third national day कौन हमरो चार्ट रे कोइ दे परिबो. Correct, Gandhi Jayanti. Okay, 2nd of October. এটা মনে রাখিও হলা 2nd of October as Gandhi Jayanti. 2nd of October is the birthday of another national hero. कि जानिछ लाल बहादुर शास्त्री. सिविल सर्विस जो माने प्रिपेयर करछन्ती तांको पई ए नाटा बहुत ही जना शुना और तांको पई अधिक सिग्निफिकेंट मध्य बिकॉज़ जो सिविल सर्वेंट आईएएस मानको ट्रेनिंग हुए और इनिशियल ट्रेनिंग जो हुए सिविल सर्वेंट मानकर जो यूपीएससी रो सेटा हुए एलबीएसएनएए जोटा कि जाना हला लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एडमिनिस्ट्रेटिव एकेडमी. एटा आगुर नथिले एटा पर एस्टैब्लिश होइछि. ओके, सो दिस इज हाउ few of the days which you must remember. ता छडा जदि आमे देखिबा 15th August is significance देखिबा on 1947 the independence came into effect transferring legislative sovereignty to the Indian Constituent Assembly. आगुर legislative sovereignty का पाकर थिला ब्रिटिश पार्लियामेंट पाकर थिला जोटा कि हमरो ब्रिटिश पार्लियामेंट हाउस ऑफ कॉमन्स और हाउस ऑफ लॉर्ड्स सेट अछंती सेटा बाइकैमरल लेजिस्लेशन इंडिया रे बाइकैमरल लेजिस्लेशन ताको पाकर थिला. बट आफ्टर 1947 it the power transferred to the Indian Constituent Assembly and India attained the independence following the independence movement voted of largely non-violent out टिके resistive civil disobedience भी थिला और मझे मझे टिके violence भी देखिया मिलथिला which we condemn. So the independence is coincided with the partition of India. जेतु independence India हला ता सहित आगोटे भी जिंस आवश्यक हला which is unfortunate, that is partition of India. That is India divided into 2 parts. What are the India and another is the Republic of or newly formed state of Pakistan. जोटा गोटे East Pakistan आउट West Pakistan. Okay, India primarily एम थिला प्राइमरी इंडिया हमरो एभला थिला. ओके, this was the part India is something like this. Okay, it हमर श्रीलंका तो एटा होची इंडिया थिला. देख परछो एटा होची अंडमान निकोबार और जो हमर लक्षद्वीप टोटल टेरिटरी ऑफ इंडिया वाज समथिंग लुकिंग लाइक दिस. पार्शियली आई एम नॉट वेरी गुड एट डायग्राम्स. तो जेतो हमर इंडिपेंडेंस हला ताहार एटी गोटे बॉर्डर पड़ गेला. ओके, इनती किसी हे गला एटा हमर ईस्ट पाकिस्तान हे गला अभी था हमर वेस्ट पाकिस्तान और एटा हैला मेनलैंड इंडिया जोटा कि फाइनली इंडिया हबी जणा पड़ला. ओके, एबे भी किछि पार्ट डिस्प्यूट हे अछि जोटा कि हमर पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर और
चाइना ऑक्युपाइड काश्मीर जे के पीओके एंड सीओके एटी मेजर दिटा प्रोविंस होची गिलगिट एंड बाल्टिस्तान एंड हियर द प्रोविंस हमर तो एटी अछि जोटा के हमर लद्दाख रो किछटा पोर्शन एटी रहि होची तो एटा भी जम्मू एंड कश्मीर वर्तमान जम्मू एंड कश्मीर ही कहू जेटा वर्तमान जो चेंज हिच हमर रिऑर्गेनाइजेशन हिच स्टेट 2019 रो एटा जम्मू एंड कश्मीर रो पार्ट अछि आम एटा होची लद्दाख रो पार्ट ओके anyway the partition was accommodated by violent riots okay 14th of august audience monraka 14th of august it's again celebrated as जानिछु पाकिस्तान इंडिपेंडेंस डे ऑफ पाकिस्तान बोल के हमें तो नहीं पाकिस्तान को सेलिब्रेट करे आज इंडिपेंडेंस डे बट इन 2021 द प्राइम मिनिस्टर करंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जी की श्री नरेंद्र मोदी डिक्लेयर कले 14th ऑफ अगस्त को एज ए पार्टीशन ऑफ गुड़ा सब नोट करिया पई चाहू जदी कर दिया 14th अगस्त एज partition or remembrance day okay after amra partition if I am mistaking a data something like this okay horror remembrance day amra 14th august to celebrate kara hochi after 2021 declared by the prime minister of india currently je achunti amra Sri Narendra Modi the first prime minister of india je kami Jawaharlal Nehru raised the national flag indian national flag before the Lahori gate of the red fort okay eta mon rakho eta good question Lahori gate of red fort it ke kale since then our prime minister he flag hoist karanti on each subsequent independence day the incumbent prime minister the current prime minister customarily raises the flag and gives an address to the nation this entire event is broadcasted in by Doordarshan okay it is completely एबी तुम देखियो 8:30 रे स्टार्ट हे जीवो तमरो ठीक हम सेशन चला पर दूरदर्शन रे एटा हमरो लाइव चलियो ओके और से दिन हमरो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान शहनाई प्ले करथिले ए नाडा मन रखो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान शहनाई प्ले करथिले ओके okay 1971 रे हमर तमिलनाडु रो जिथिले सीएम ओके ते के करुणानिधि से एटा रिक्वेस्ट करते देन प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी को कि प्रति स्टेट मानन करे चीफ मिनिस्टर माने मध्य ऑफिशियली फ्लैग होस्ट करि पारिबे ओके तो प्रति स्टेट कैपिटल मानन करे 1971 परठु नहीं 1973 परठु 1974 टू हमर प्रति स्टेट मानन करे मध्य 1974 ओके दिस इज द करेक्ट 1974 रो आज पर्यंत जितकी हम स्टेट अछि इंडियन स्टेट अछि से स्टेट रो चीफ मिनिस्टर माने मध्य स्टेट कैपिटल रे फ्लैग होस्ट करंती ओके व्हाई 1947 व्हाई 15th August is celebrated as क्वेश्चन कर सकते कि कहि परियो व्हाई 15th August is celebrated as इंडिपेंडेंस डे 15th August को काहे इंडिपेंडेंस डे भाबे सेलिब्रेट करल जाय कि कहि परियो कि okay now sound is okay sound clear अछि okay 15th August को काहे इंडिपेंडेंस डे भाबे सेलिब्रेट करल जाय कि जानि छ एनीवन why 15th August is celebrated as Independence Day first of all 1930 तम मन रखियो ओके 1930 रे हमरो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट तो होइतिला 1929 कांग्रेस सेशन was led by
INC session led by Jawaharlal Nehru. It historic कौन है Purna Swaraj Declaration. Again, a question of preliminary. मन रखो. Purna Swaraj declare हिला इटे complete independence. Okay. Purna Swaraj जो complete independence declaration हिला और the Declaration of Independence India was promulgated on 29 or on the 1929 INC session, which was conducted in कोठी हिला इटा लाहौर रे हिला. सेते बड़े हसरत मोहानी नेम मन रखा ये क्वेश्चन बड़ा एड़ा आसी जाए एग्जाम रे. Hasrat Mohani was the first person in Indian history who demanded complete independence. Okay, Monrapam, who is the first person who demanded complete independence? A Congress say to civil disobedience amara start करता to carry out civil disobedience. और सेठी महात्मा गांधी को से देथिला amara दायित्व देथिला कि सिविल डिसोबीडियंस को तुम आपण निज हिसाब रे एटा को स्टार्ट करंतु. एनीवे आमे सिविल डिसोबीडियंस विषय डिस्कस करबा बट 1930 पर टू आमे जेतु डिसेंबर रे होतिला सेशन टा 26 जनवरी रे हमरा the Congress observed 26 January as the Independence Day. Okay, मन रखो 26 January को हमें पाड़ुथुले Independence Day from 1930 to 1946. तो 1930 to 1946 हमारा Independence Day पाड़ा होतला. Okay, 26th of January. Okay, but हमारा 15th August को चूज करिया रीजन हला जून और जुलाई बेलू आम इंडिपेंडेंस एक्ट आसीला. ओके, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट आसीला बट सेते डिक्लेयर न करिकिना आउर टिके स्ट्रेच करिया रीजन होची सेते प्राइम मिनिस्टर एटली थिले ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर एटली आउ तमर हमर तो गवर्नर जनरल थिले कि थिले गवर्नर जनरल सेते सर माउंट बैटन. ओके, सर माउंट बैटन, he was the governor general of then India. He decided कि 15th August ठीक 2 वर्ष पूर्व ही कौन हेतिला 2 वर्ष पूर्व 15th August रे जापान surrendered before the Allied party. Again Allied party जेतले कहली सेकंड वर्ल्ड वॉर मन रखो. ओके, सेकंड वर्ल्ड वॉर किबा आपको कह जाए द्वितीय विश्व युद्ध बेले 6th of August 6th of August 1945 এই দিন দুইটা परमाणु बम ओके न्यूक्लियर बम से ब्लास्ट करथिले गोटो जापान रे हिरोशिमा एंड नागासाकी रिस्पेक्टिवली 86th रे 89th रे या पर 15th of August रे ओके जापान सरेंडर करथिले बिफोर द एलियड पार्टी और से दिन को म रिमेंबर करिकना से कहले कि याको हमें फ्रीडम स्ट्रगल भाबे हम सेलिब्रेट करो 15th अगस्त को इंडिया. दैट वाज द प्राइमरी रीजन. ओके, इंडिया को 15th अगस्त रे देले कि आउ 15 दिन आउ जिन एक्स्ट्रा नहीं गले जेतो एलियड पार्टी रे कंप्लीट एलियड पार्टी इंडिया भी पार्ट थिला. इंडिया आल्सो सपोर्टेड द ब्रिटिश ड्यूरिंग आवर वर्ल्ड वॉर. तो एटा को सेलिब्रेट कर दियो. तो इट वाज नॉट प्लान प्री प्लान बट इट वाज से समय रे सिंपली सुजग बनी गला. तो ताको 15th अगस्त को नहीं आइला हला या तो कोइंसाइड करू छ हमर जापान रो सरेंडर सहित. बट 26th to again 26th of November 1950 इंडिया तो इंडिपेंडेंस गला केबे 15th August 1947 रे. बट हमरा 2 years धरगिना हमर चलला हमरा constitution making जोटा भी completely हमर आसिला came into effect on 26th
January 1950 again 26 ए बहाना रे सेटा को की पेंडिंग कर रखा है 1.5 मास और ठीक 26 जनवरी को हमरा रिपब्लिक डे हिसाब से सेलिब्रेट करा गला रिपब्लिक डे टू कमेमोरेट आवर एडॉप्शन ऑफ कौन रिपब्लिक जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को हम एडॉप्ट करा गला से दिन ओके एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया व्हिच रीड्स कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कोन द प्राइमरी लॉ बुक ऑफ इंडिया जो कि हम प्रिएम्बल्स अछि सेठी हमरो 22 टा पार्ट अछि 395 आर्टिकल्स अछि ओके सेठी हमरो 12 टा शेड्यूल अछि और सेटा हमरो टाइम टू टाइम अमेंड होछि जो प्रिएम्बल अछि सेठी लिखा अछि वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India a sovereign socialist secular democratic republic and give and secure our citizens justice that is social economical political liberty of thought expression belief faith and worship equality of status and equal opportunity to all, fraternity, securing individual dignity and integrity of the nation. On this 26th day of November 1950, we adopt and to give ourselves this constitution. Something like this. Well, comma full stop mistake thibo, comma spelling mistake thibo. Excuse me for that, but एमती किछि लिखा है हमर कोठी प्रिएम्बल रे तो प्रिएम्बल वाज कि गोटे जिनस जोटा कि हमर कॉन्स्टिट्यूशन रो आत्मा को हम से गणना होती गोटे प्रीफेस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को कहा जाए तो हम ओवरऑली बुझले कि काहे कि हमर 15th अगस्त को काहे हम इंडिपेंडेंस डे हिसाब रे नउछन ओके जितम सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट कहली सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट टा केमि स्टार्ट हला हमरो महात्मा गांधी ओके लीड करथिले सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट टू द सॉल्ट मार्च हिस्टोरिक सॉल्ट मार्च या विषय समस्त अवगत अच्छा तो ब्रिटिशर्स और एंड इवन द कांग्रेस थॉट कि सॉल्ट को कोन जिंस नै कि आपन नै सॉल्ट मार्च काहे करछन्ते इट विल नॉट बी सो मच इफेक्टिव बट महात्मा गांधी वाज वेरी क्लेवर ही न्यू दैट सॉल्ट हैज इट्स ओन पावर सॉल्ट मार्च करे कि भी हम बहुत किछि करि परिबा काहे कि ना he knew गांधी कहथिले आफ्टर फूड एंड आफ्टर वाटर एंड एयर द थर्ड मोस्ट किछि इंपोर्टेंट अछि दैट इज द सॉल्ट विदाउट सॉल्ट हमें बंच परिबानी और सत्य को सत्य ब्रिटिश गवर्नमेंट पर जान करला कि सॉल्ट वाज कंट्रीब्यूटेड 8 पॉइंट समथिंग परसेंट ऑफ टैक्स केवल सॉल्ट रहउतला तो से सॉल्ट लॉ वायोलेट करले कि कहले हमें सॉल्ट टैक्स भरिबोनी सेतो एक्चुअली ब्रिटिश एक्सचेकर ऊपर बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ला और ब्रिटिश एक्चुअली हली गले तापरे तो एठी गांधी जी जो डिसीजन मेकिंग आ जो कहउची जो स्ट्रेटेजिक तांकर जो डिसीजंस को हमर प्रेज करा जाए कि सॉल्ट को से आज सिंबल नै थिले हमर सिविल डिसोबीडियंस माने सिविल डिसोबीडियंस पाई के आउ सिविल डिसोबीडियंस रे सॉल्ट मार्च रे मध्ये ताकू सपोर्ट के करथिले कांग्रेस निजे ही ताकू सपोर्ट करथिले okay so before independence हमरो सिविल डिसोबीडियंस आसी ही थिला So this came after the Lahore session 1930. After the Lahore session, the Congress Working Committee gave Gandhiji the responsibility of organizing the first act of civil disobedience. एठी मु कहली Gandhi's plan was to begin civil disobedience with a satyagraha aimed at the British salt tax. As I said, the salt tax 1882 आस्तिला okay 1882 सॉल्ट एक्ट ओके गोटे एक्ट आस्तिला जा थ्रू कि हमहु कोन करे पड़थिला हेवी टैक्स दवा पे पड़थिला हेवी टैक्स दवा पे पड़थिला
gave British a monopoly over the collection of handling the government salt depots and levying salt tax. And by violating the Salt Act was a criminal offense. एवढा थिला. So initially Gandhi's choice of salt tax was made disbelieved by the British and even the Congress. The British Lord Irwin ଯେତେବେଳେ viceroy ଥିଲା ଆମର କିଏ ମନେ ରଖ ଏ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସେ ଯେତେବେଳେ viceroy କିଏ ଥିଲେ Irwin ଥିଲେ. So viceroy Irwin himself did not take the threat of salt protest seriously. ये कहले एटाको it is serious matter nahi. However, Gandhi had sound reason of decision because ये 8.2% सेटलर टैक्स रा पार्ट थिला. गांधी जी चूज अच्छा सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट आपको सीडीएम शॉर्ट रे कहा जाए. ये केबे स्टार्ट हेतिला हमरो सॉल्ट मार्च और सॉल्ट मार्च रो इनिशियल थिला हमरो केबे के कहबो सॉल्ट मार्च केबे स्टार्ट हेतिला लेखि कि जणा समझते. Okay, 6th of April to launch the mass breaking of salt law, a symbol of a region. It was the first day of the National Week begun in 1919, where Gandhiji conceived the National Hartal. तापरे जेतु रॉलट एक्ट नेशनल हड़ताल इतला एटा तापरे नेक्स्ट टाइम आफ्टर 1919. ओके, दिस वाज द ए दिन हो सबुट बड़ प्रोटेस्ट इतला 6th April जे हमर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट सॉल्ट लॉ आस्तिला सेतेबेले. On the March to 1930, Gandhi wrote to Irwin offering to stop the march if Irwin met 11 demands. So Gandhi को 11 डिमांड थिला ताको फुलफिल करिया पे थिला. The salt march was also called the white flowing river. याको कोन कहला the white flowing river because all the people joining the procession wore white khadi. समझते white khadi पिनथिले. Okay, so Gandhi ji started it at 6th April रे हमरो salt march रो जो प्रोटेस्ट सरथिला बस स्टार्ट हेतिला 12th of March. Okay, so 25 days एटा चलथिला हमरो स्टार्ट हेतिला कोठी साबरमती आश्रम. अब केते जन वॉलंटियर थिले जानि छ पाखा 72 वॉलंटियर्स 78 जन वॉलंटियर थिले. अब इट रन टू 24 days from 12th March to 6th April. क्लियर. अब केते दिन मार्च करथले पाखा 240 माइल्स से मार्च करथले from Sabarmati Ashram to okay 240 miles. साबरमती आश्रम टू हमर कोडी एजे डांडी इटा गोटे बीच अच्छे हमर काठियावाड़ रीजन रे 240 miles 24 days. इटा हेतिला हमर 12th of March इटा 6th of December. मन रहला केते लोक थिले 78 volunteers. ओके, और सेमान को कोन गला सत्याग्रही बोली कहला. वेट ही फर्स्ट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट बोली केटा को कहा गला. And this salt satyagraha quickly grew into mass satyagraha in Peshawar. Okay. Peshawar जोड़ा पाकिस्तान सत्याग्रह led by किए लेड करते पेशावर एटा को
खान अब्दुल गफर खान जहाँ कह जाए ओके फ्रंटियर गांधी सी कौन करथिले जब यहाँ जो आसिले मन रख खान अब्दुल गफर खान वाज नोन एज द फ्रंटियर गांधी ये एस्टाब्लिश करथिले खुदाई खिदमतगर ओके खुदाई खिदमतगर जोटा कि 50,000 नॉन वायलेंट एक्टिविस्ट को नेकी एजेंट को 50,000 नॉन वायलेंट एक्टिविस्ट को नेकी स्टार्ट करथिले ऑन 23rd अप्रैल 1930 यहाँ को अरेस्ट करा गया ओके से समय रे सल्ट मार्च को हमरो सी राजगोपालाचारी जी की was the first Indian viceroy and the last was viceroy of independent India ये होचंती फर्स्ट इंडियन वाइसरॉय और लास्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया श्री सी राजगोपालाचारी जे पर हिथिले सी एटा को हमर सल्ट मार्च को कोडी करथिले हमर मद्रास रो कोस्ट ओके मद्रास कोस्ट श्री राजगोपालाचारी लीड करथिले सेम जिंस हमर मालाबार कोस्ट के केलप्पन मन रख के केलप्पन ये मालाबार कोस्ट रे करथिले अच्छा के कहबे ओडिसा कोस्ट रे कोठी थिला इंचुडी सत्याग्रह हेतिला ओके ओडिसा रे के लीड करथिले ओपीएससी ପାଇଁ बहुत इंपोर्टेंट गोपबंधु को नेकी ओपीएससी ऑलरेडी क्वेश्चन बनाई छी ही लेड रमादेवी माने पार्टर थिले बट लेड बाय गोपबंधु दास द फर्स्ट टाइम वुमेन बिकम मास पार्टिसिपेंट्स जेमति कहली हमर रमादेवी मान समस्त थिले ओडिसा रे सेमति मास पार्टिसिपेंट हेले थाउजेंड्स ऑफ वुमेन from large cities to small villages became the active participation in satyagraha okay Gandhiji had asked only men to take part in the salt satyagraha but eventually women became the manufacturing and selling salt throughout India Sarojini Naidu became the first woman to be arrested in salt march in nata mon rakhibe okay in response to salt march the British invited for the first round table conference हमर राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस ପାଇଁ बोली ना ब्रिटिश इनवाइट करथिले जेटा फर्स्ट टाइम हितला 1930 रे ओके डेट कहबे नवंबर 12 1930 रे समस्त को डाकिले कोठी लंदन मुस्लिम लीग हिंदू महासभा लिबरल्स एंड समर एडी केथिले मुस्लिम ओके हिंदू महासभा also liberal parties were part of that which was postponed to 12th January 1931 in the absence of any major leader from 1931 रे तो हमरा राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हला सेडी साइन हितला गांधी इरविन पैक्ट ए डेट गुडा बहुत इंपोर्टेंट Gandhi Irwin Pact 1931 the moderate statesmen Tej Bahadur Sapru M.R. Jaikar and Srinivas Shastri initiated effort to break the ice between Gandhiji and the government okay these were the leader हमर सेटा गांधी इरविन पैक्ट को हिला एटा को कह जाय दिल्ली पैक्ट बोली मध्ये कह जाय दिल्ली पैक्ट 1931 again
डेट जदि कहबे मार्च 5 या डेट इतना इंपोर्टेंट नहीं. In this, the INC called off the civil disobedience movement. 1931 जाके मोर civil disobedience movement रो इटी called off the civil disobedience movement. इतने ये डेट टिके या पे ये डेट टा इंपोर्टेंट होची. Civil disobedience movement स्टार्ट हितिला मार्च रे एंड भी हिला मार्च रे 12 मार्च 1930 रे स्टार्ट हितिला 5 मार्च 1931 रे ये एंड हिला. In this, INC called off the civil disobedience movement and agreed to join the second roundtable conference. Okay, the second roundtable conference हुआ पूर्व जो गांधी इवेंट पैक्ट है गांधी को डिमांड थिला कि हमर किसी पॉलिटिकल प्रिजनर अछि समान को हमर खोल छाड़ दिया जाओ. तो ताकर कंडीशन रखाई थिला कि आमे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट आमे बंद कर दो, कॉल ऑफ कर दो. ता बदल रे जो हमर सिग्निफिकेंट पॉलिटिकल लीडर्स अछि खास करके मॉडरेट लीडर्स नॉट एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स समस्त को छाड़ दिया जाओ. ओके, the Karachi session 1931 okay endorsed the Gandhi event pact. The Karachi session is also memorable for its resolution of fundamental rights and national economic program. एटा वर्तमान टी पर डिस्कस करिबा. The second roundtable conference, Gandhi represented the INC as the sole representative. Okay, second INC जो हला इथे INC को रिप्रेजेंट करथिलेन जे गांधी. और सेठी सरोजिनी नायडू भी जाइथिले एज डेलीगेट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडियन वुमेन. वुमेन मान को लीडर के थिले मन रखिबो हमरो ओडिसा रे जदि आरटीसी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जे अटेंड करथिले से होचंती श्री कृष्ण चंद्र गजपति. He was the first prime minister of independent Odisha 1936 रे. से ओडिसा रो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर भी डिक्लेयर हितिले और से ओडिसा रो हमर अटेंड करथिले राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस. In this conference, Gandhiji demanded immediate establishment of full responsible government at the center as well as the province with complete control over defense, external affairs and finance. ये responsible government establish करे पई कहथिले डिमांड करथिले जोटी कि फाइनेंस रो, डिफेंस रो आ हमरो एक्सटर्नल अफेयर रो सब जिंस रो power soil. However, this session was soon deadlocked on the minorities issue, and this time separate electorate was demanded not only by Muslim but also by depressed class Indian Christian and Anglo Indians. Okay, it attend करथिले हमरा सर B.R. Ambedkar भी attend करथिले. ए सब जिंस छाडी कि समान कहले सेपरेट इलेक्टोरेट हमको दियो. एटा डिमांड करले मुस्लिम लीग, depressed class, okay, Indian Christians and Anglo Indians. Then Sir MacDonald ended the session with the address which announced the creation of a new Muslim majority province, Sindh, set up the committee on franchise, finance and state, and held out the humiliating and the dangerous prospect of of the unilateral British communal award if Indians fail to agree among them. तो एठी हमरो सिविल डिसोबीडियंस हेतिला. तो एठी कहले जेहेतु तांकर फुलफिल हेलानी पुनी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को हमरो रिज्यूम करा हेतिला और 1932 रे एटा को इलीगल डिक्लेयर करा कि गांधी को सेठी अरेस्ट करा हेतिला. येरवाड़ा जेल रे भर्ती कर दिया हेतिला. पुनारे जोटा अछि हम येरवाड़ा जेल. ये सब जिंस परसुत लिंक थिला. ओके, 1932 again the civil disobedience movement withdraw हेतिला 1934 रे because after Gandhi decided to make Harijan work and central plank with the rural constructive
एठी हमर कोन हेतिला पुना पैक्ट साइन हेतिला जेटा कि सेप्टेम्बर 25 ओके सेप्टेम्बर 25 1932 ए डेट गुडा मन रखियो हला इरविन गांधी इरविन पैक्ट पुना पैक्ट ओके फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 25 सेप्टेम्बर 1932 रे हमर पुना पैक्ट हेतिला जोठी की को माने पार्ट थिले ओके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर on behalf of backward classes Madan Mohan Malviya okay Madan Mohan Malviya on behalf of the forward classes actually he was a Hindu leader okay Madan Mohan Malviya was the founder of Banaras Hindu University he is the founder of Hindu Mahasabha he was the chairman of Banaras Hindu University how he was the he again Madan Mohan Malviya was the president of Congress 3 times केतबेले गोटे 1908 रे हिथिले थरे 1917 रे 18 रे हिथिले ओके आउ थरे 1932 रे हिथिले तीन थरे हिथिले इंडिया ये आईएनसी प्रेसिडेंट और तांकर तांको 2015 रे भारत रत्न रे सम्मानित करा जायतिला पोस्टमोसली ओके आज को 10 वर्ष हे गेला हमको ताको मदन मोहन मालवीय को एटा भी क्वेश्चन आसी पारे बिकॉज़ यहाँ को बहुत सेलिब्रेटेड पर्सन कर स्पेशली तो ए गवर्नमेंट फॉर्मूला मदन मोहन मालवीय को गोटे भारत रत्न भी प्रोवाइड करायला इन दिस मतलब पुना पैक्ट द सेपरेट इलेक्टेड फॉर डिप्रेस्ड क्लास वाज अबैंडन्ड बट सीट्स रिजर्व फॉर देम इन द प्रोविंशियल लेजिस्लेचर वेर इंक्रीज्ड तांकर जो प्रोविंशियल लेजिस्लेचर रे डिप्रेस्ड क्लास ପାଇଁ रिजर्वेशन थिला आगुर केते थिला सेटा 71 थिला तब इंक्रीज करके 148 कर दिया गला एंड आल्सो 18% seats were reserved for the depressed class in the imperial legislature okay एटी तंकर 71 रु 148 हिला प्रोविंशियल रे इंपीरियल रे तंकर 18% तक में रिजर्व हिला I would take fact मन रखो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू रो ओके ऑल इंडिया anti-untouchability league okay all india anti-untouchability league जोटा कि हमरा सितंबर 1932 रे स्टार्ट हेतिला या परे ओके जेतले गांधी को अगेंस्ट रे गले ना बी आर अंबेडकर सर सी कोन गले गांधी ही स्टार्ट करले anti-untouchability league okay it was first president और यार फर्स्ट प्रेसिडेंट के जीडी बिरला घनश्याम दास बिरला यार फर्स्ट प्रेसिडेंट थे It was later called the Harijan Sevak Sangha. Okay, ये जो anti-untouchability leader वाला recently it has कि हरिजन बोली ताको कुहा जीवन बोली एटा डिक्लेयर करा हिची गांधी also started the weekly हरिजन in मन रखो गांधी गोटे weekly स्टार्ट करले जानना भी हरिजन थिला केबे जनवरी 1933 so these are few of the facts again say 8th May 1933 रे Gandhi decided to begin a 21 day fast 21 दिन ପାଇଁ से भूख किबा उपवास रो डिक्लेयर करले जेटा कि हंगर स्ट्राइक टाइप रो for the purification of himself and his associates for the Harijan cause okay ये एमती गोटे फास्ट करले यार एस्टैब्लिश करले कहा पई केवल डिप्रेस्ड क्लास मान को पई सो कॉल्ड डिप्रेस्ड क्लास मान को रिप्रेजेंट करंती बोली गोटे प्रूफ करके देखले ही स्टार्टेड द इंडिविजुअल सिविल डिसोबीडियंस ऑन ओके अगेन 1st August
1943 रे ये कौन कले इंडिविजुअल सिविल डिसोबीडियंस ओके इन 1934 जानते समझते एटा 1934 गांधी जी रिजाइन फ्रॉम कांग्रेस ओके मन रख या परे हमर 1932 रे हमर थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस भी हेतिला और जो थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हेतिला याको फ्रूटलेस बोली भी डिक्लेयर कहा जाए जोटी कि किंतु दी जन लीडर थिले जो माने कि तीनटा जाक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस अटेंड करथिले गोटे त निजे डॉक्टर बी आर अंबेडकर और सेकंड होचंती सर तेज बहादुर यदि पढ़िला मन रख सपोर्ट ओके ए दी जन लीडर थिले जो माने कि तीनटा जाक आरटीसी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस अटेंड करथिले The meeting of All India Kisan Congress was held in 1936. Ita mon rakha 1936 रे All India किसान कांग्रेस कोठी थिला लखनऊ रही अंडर द प्रेसिडेंटशिप ऑफ हु इज द प्रेसिडेंट क्वेश्चन डायरेक्ट आसला एटा यूपीएससी रे बहुत थरा आछि ओके सहजानंद सरस्वती वाज द प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया किसान कांग्रेस जोटा कि हमर लखनऊ रे हेतिला आरटीसी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस सिविल डिसोबीडियंस परे हमर आसी गला गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 ओके आ जहा को हमर प्राइमरी सोर्स माना जाउची जो वर्तमान कॉन्स्टिट्यूशन अछि ओके सेठी अधिकांश जिंस अछि हमर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 रो डिराइव होइजे ताको कहला a white paper on constitutional reform was the result of the round table conference to study the Simon Commission report. The white paper was the analyzed by Joint Select Committee chaired by Lord Linlithgow of British Parliament. The Joint Select Committee, after examining the Simon Commission report, drafted the Government of India bill that resulted in the Government of India Act 1935. And the Congress rejected the 1935 Act and demanded the convening of a Constituent Assembly elected on the basis of adult franchise to frame a Constitution of Independent India. Okay, एटा को भी INC रिजेक्ट कला डोमिनियन स्टेटस दोथिला तो कहले नाही हम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया दरकार आउ एटा को कहले कि जवाहरलाल नेहरू कहले एक वी आर प्रोवाइडेड विथ द कार ऑल ब्रेक्स एंड नो इंजन याको हमें निजर खाली ब्रेक करिया ପାଇଁ यूज करछु हम कोनसी एथे हम प्रोग्रेस हबनी तो 1937 रे प्रोविंशियल इलेक्शन हला जोट की पाखा पाखी 4.25 मिलियन वुमेन acquired the right to vote total 14% of the population 1937 रे म प्रोविंशियल इलेक्शन हला मन रखो एठी हमरा 4.25 मिलियन जोटा कि 4 कोटी पाखा पाखी मिलियन women acquired the right to vote, which consists of 14% of total population. The A election रे INC okay majority जितिला पाखापाखी formed मिनिस्ट्री और गवर्नमेंट को रिफॉर्म कला टोटल
11 province रे थिला आउट ऑफ 11 8 province रे आईएनसी निजर गवर्नमेंट स्थापना करि पारथिला ओनली बेंगल पंजाब सिंध हैड नॉन फाउंड जोटी कि नथिले गोटी ए जो 11 जो तीनटा रहले तीनटा हेले गोटे होची बेंगल गोटे होची पंजाब आउट होची सिंध मोस्टली परे गुडा पाकिस्तान ही थिला एठी केवल नॉन कांग्रेस मिनिस्ट्री बोलला बाकी सब गोटे कांग्रेस हेतिला तापर 19 समस्त जानथियो 1940 बेलको सेकंड वर्ल्ड वॉर आसी थिला लॉर्ड लिनलिथगो डिक्लेयर्ड इंडिया टू बी एट वॉर विदाउट प्रायर असेंट ऑफ द सेंट्रल लेजिस्लेचर ओके लॉर्ड लिनलिथगो सेतोला हमरो वाइसरॉय थिले से डिक्लेयर करले कि इंडिया वॉर रो पार्ट हबो किंतु सेंट्रल लेजिस्लेचर यार कोनसी परामर्श नै नथिले द कांग्रेस okay agreed to the support of Britain only in return of the independence being granted से कहले हम पार्टिसिपेट करबो किंतु हम इंडिपेंडेंस हेले जेकी पार्टिसिपेट करबो द वाइसरॉय कुड प्रॉमिस दिस ओनली आफ्टर द वॉर यदि वॉर हला जितिले त हम निश्चय हम इंडिपेंडेंस दबो इन अक्टोबर नवंबर 1939 द कांग्रेस मिनिस्ट्री रिजाइन्ड इन प्रोटेस्ट द मुस्लिम लीग observed this as deliverance day जोटा कि 22 डिसेंबर हमरो 1939 रे आस्तिला so in 1930 first time हमर कोन हितले आउट इन मन रख 1930 for the first time poet Muhammad Iqbal okay Muhammad Iqbal he was the writer of the author of the or the poet जे कि लिखितिला हम सारे जहां से अच्छा जब पर हमर नेशनल एंथम भी नवा बोली डिस्कशन होतिला तो स्टार और जे राइटर से प्रथमे suggested that frontier province Balochistan, Sindh and Kashmir be made the Muslim state within the federation. गोटे अलगा स्टेट बनेबा ओके वर्तमान जे देखिबा सेटा कोने एटा पाकिस्तान धरिनो ओके पाकिस्तान टाइम के अछि तो एटी कश्मीर अछि तो याकु मिसे से कहिदिले कि गोटे जेएनके ओके ये होची फ्रंटियर प्रोविंस एटा होची पंजाब ये होची तंत्र सिंध सिंध प्रोविंस और देखिए बालूचिस्तान ये सब मिसे से गोटे सेपरेट मुस्लिम स्टेट हो एरा यांकर डिमांड थिला चौधरी रहमत अली gave the term Pakistan in 1933 मन रखो चौधरी रहमत अली ये टर्म पाकिस्तान को ये कॉइन करथिले और फाइनली मोहम्मद अली जिन्ना जे कि आपको प्रैक्टिकली गोटे कंप्लीट स्टेट करिया बोले डिमांड करथिले मुस्लिम लीग फर्स्ट पास द प्रपोजल ऑफ सेपरेट पाकिस्तान केबे अगेन लाहौर सेशन मुस्लिम लीग रो अलगा सेशन होतले लाहौर सेशन रे ओके 1940 रे ये डिक्लेयर करले कि हम गोटे अलगा स्टेट बनेबो आ जिन्हास टू नेशन थ्योरी बोली आगु कहा जाए ओके 1940 रे आस्ते जिन्हास क्लियर and in 1943 in the month of December the Karachi session of Muslim League adopted the slogan divide and quit okay koti Karachi session of Muslim League ये कहते divide and quit 1940 again in August okay
It has a significance number. And when the Congress ministry in the province resigned, the British arose and wanted to get support of the Congress for the war. In 1940 March, Congress was met in Ramgarh under the Abul Kalam Azad. In the annual session, the INC passed the resolution offering the British government of support in war. এটা কোড হইছিল রামগড় সেশন রে, যেটা কি বিহার আছে, led by Abul Kalam Azad. Okay, this was responded by Lord Lithgow in the sort of proposal. এই প্রপোজাল বেড়ে ইয়াকু কুহাযাଏ অগস্ট offer. The INC passed a resolution offering the British government support in war if provincial national government is set up at center. This was responded by the Lord Lithgow in the sort of proposal which is called August offer. Basically, Hitler's outstanding success in the ongoing Second World War and the fall of Belgium, Holland and France had put England in the conciliatory mood. ସେଥିପାଇଁ ସେ କହିଲେ କି ତମେ ଆମର ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କର, ଆମେ ତମକୁ provincial government ଦେଇ ଦେବୁ ଆଉ ତମେ ଅଗଷ୍ଟ ଅଫରରେ to accept karo. But Congress turned down the August offer and set up national government at the center, but proposing the following. Congress proposed kala ki dominion status are the objective of India. Okay, Congress demand karthila ki dominion status. It is 1940 रे कथा या परे हमर 1935 एक्ट आस्तिला, expansion of Viceroy Executive Council, setting of Constituent Assembly after the war, and mainly Indian would decide the constitution according to their social, economic and political conception. Okay, जोटी की हमें fulfillment of obligation of government regarding to defense, minority right, treaties with state, all India services. The future constitution to be adopted without the consent of the minorities. The Congress rejected the August offer. Nehru said dominion status concept is dead as a doornail. तो वर्तमान dominion status रे कौनसी दरकार नहीं, हमें complete independence दरकार है. For the first time, the inherent right of the Indians to frame the constitution was recognized, and the Congress demanded for the Constituent Assembly was conceded. Dominion status was explicitly offered. यहाँ पर दिया जाएगा. या परे हमर डिटेल पर देखियो केतले सेशन रे सीआर फॉर्मूला आसला, इंडियन नेशनल आर्मी रो इंडियन नेशनल ट्रायल भी हितिला, तापर ताकर भी वावेल प्लान आसला 1945 रे. ओके, देन शिमला कॉन्फ्रेंस और जनरल इलेक्शन 1945 not 1946, तापर हमर कैबिनेट मिशन प्लान 1946, देन आसला हमर इंडिपेंडेंस इंडिया एक्ट 1947. दिस वाज द हमर होल जर्नी. 1947 पूर्व इंटरिम गवर्नमेंट बनथिला, इंटरिम गवर्नमेंट रे हमर direct action day again 1947, 1946 16th of August direct action day declared by called by Jinnah. और तापर हमर constituent assembly form हेतिला और धीरे धीरे करके हमर इंडिया इंडिपेंडेंस हेतिला. दिस वाज द होल स्टोरी के इंडिया. हम नेक्स्ट सेशन रे गोटे गोटे पार्ट में आगु शेड्यूल दे देबी कि सेही दिन सेही जिंस डिस्कस करा हबो और सेही जिंस हम डिस्कस करबी. ओके, जेहेतु फर्स्ट सेशन थिला इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया डे रे. ओके, इंडिया इंडिपेंडेंस डे आज सेतने किछि जिंस हम इंडिपेंडेंस डिक्लेयर करली. होपफुली समते किछि जिंस आज नै थिबो एठू. ओके, नेक्स्ट सेशन में याकू एठू कंटिन्यू करबी. एटा को सेव कर दो आज जो माने अटेंड करना देखिन अटेंड एंड दिस इज फ्री जीबी चाहिए एटा को डेमोन्स्ट्रेशन देखि परिबे. नेक्स्ट सेशन हम कंटिन्यू करबे. बिफोर दैट आई विल प्रोड्यूस ए शेड्यूल. ओके, होपफुली समते इंफॉर्मेशंस किछि पाइलो एवले मु कोन करबी हमरो रिवीजन रे कि रैपिड रिवीजन रे बहुत जिंस कांसेप्ट कवर करिया पे चेष्टा करी, बहुत सारा जो टॉपिक्स भी कवर करिया पे चेष्टा करबी. ताते करंट अफेयर जहां भी अच्छा डिस्कस इन दिस सेशंस हाउ टू इंप्रूव हेजो धीरे धीरे करी ना. जे फर्स्ट सेशन पिला टेक्निकली टे ग्लिच होतिला, सो आको टे कंसीडर करा और नेक्स्ट सेशन गुडा आउट इंप्रूव होइबो और तमरो रिवीजन हेजो एग्जामिनेशन पानी का. ओके, सो समस्त को विश यू हैप्पी इंडिपेंडेंस डे. ओके, थैंक यू फॉर बीइंग हियर. रोज ताले ठीक है कहबो कि
Anything you want to comment or suggest? Was I audible throughout? ମୁଁ ତୁମକୁ शेड्यूल ଦେଇଦେବି ଆଗକୁ ନେକ୍ସଟ ପୁରା ୱିକ୍ ରେ କଣ କଣ ଡିସ୍କସ୍ କରାହବ ତ ତମେ ବି ଆଗରୁ ମାଇଣ୍ଡ ସେଟ୍ କରିଦେଇଥିବ କି ଏଇ ଜିନିଷ ଡିସ୍କସ୍ କରାହବ ତାକୁ ନେଇକି ଆମେ ଡିସ୍କସ୍ କରିବା ସେସନ୍ସରେ। ଆଚ୍ଛା କିଏ କିଛି କହିବ ଯଦି କହିଦିଏ ଚାର୍ଟରେ। ଠିକ ଅଛି ରହୁଛି ହଁ।